Okay, guys. So in last session we discussed about the ESXi. So let's discuss ESXi in deep. Okay. So what is this box is nothing but your physical server. Okay. And on top of it, generally, if you want to install Windows operating system, then what you will do? You'll connect through pen drive, right? Correct? Pen drive or CD drive. Are you guys with me? Yes. Okay. So Yes. generally, if you want to install any Windows operating system, then you will do like that. Then that Windows operating system will get installed without any issue. And this Windows operating system will take full control over your hardware. And then you will start activating the services like FTP, DNS, TFTP, DSCP, all those services, small application, you will do it. But generally what happens, in big organization, you will have only one service per server, right? If DNS is there, then DNS will not act as a DSCP as well. Multi-role is not allowed in organization. So what you'll do, you'll have single role. You'll not have multiple roles. So one server will only act as a DNS. Then second server will act as a DSCP. Third server will act as a FTP. Okay. But now in ESXi, what will happen? Instead of having only one server one service per server, our next approach is same physical box. There is no change in box. Instead of using Windows hypervisor, the Windows operating system, we are going to install the ESXi hypervisor. Okay, so this is type 1 hypervisor or type 2 something, ESXi. This is one of operating system. You will download and install it through pen drive. Or if you have ISO file, then you can also do it. Sir, Okay. one question. Can you please let me know what is type 1 or type 2? Okay, the one, see, this is type 1. I'm also confused in that. I think type 1 is this one and type 2 is Windows Workstation hypervisor. Type 1 is one which is running on a bare metal server. Okay. Yeah. Yeah. And type 2 is which one which is working on the operating system, like Yeah. type 2. Okay. So generally, this is my operating system on 51. Okay. So on this operating system, I have this hypervisor application called as VMware Workstation. Okay. You'll have one more. What is that name? Which is Microsoft one, or I think Oracle's, right? Yes, So Oracle. this is type 2. Okay, Yes. and type 1 is something which is directly installed on your hardware, and this is inside of your software operating system. Correct, Shabib? Yeah. Yes, Okay. sir. Okay. So now let's move ahead. So this is the physical hardware. On top of it, I'm going to install ESXi. But now, though this is lab, so what I'm doing, I'm this hardware just treat it as a VM. For you, I configure it as a virtual machine, and then we are going to install on top of it that ESXi operating system. Okay. So what I'm going to do, yesterday I shown you that how to create Windows machine and Linux machine, correct? So I'll go it again. I'll go for new virtual machine inside of my Windows. Next, then I'll have that ISO. I'll use Slacks, or there is a Bodhi as well. I'll use this small one, Slacks, Linux operating system. Okay. Then I'll give some, I'll select this one of the Linux kernel and all these things. So it will choose the CPU and memory accordingly. If you select Windows, then it will select 4 GB of CPU, RAM, and something GB of hard disk, 30 GB of hard disk, and like this. Okay. So here I'm selecting that I'm going to install this operating system, and this one I'll make it as a test VM, and then I'll click next, and then the hard disk will be multiple or single. It will create partition, or it should be a single file. Okay. If you want to tweak the hardware, you can go ahead and tweak it. If no, then let's go ahead and continue. So this way I have created one virtual machine. Okay. So this virtual machine is nothing but Linux virtual machine, and it's installed where?
It's installed on top of your Windows. Suppose this is your hardware, this is your operating system Windows, and this is your type 2 workstation, VMware workstation. Okay, and here I install one small instance as of Linux. Even in parallel, I'll go ahead and install, I can go ahead and install Windows. Correct. So this is type 1, but here in production type 2, sorry, this is type 2, and in production type 1 will be in picture. So what they will do, they will buy one hardware, blank hardware, and on top of it they are going to install the ESXi operating system. How we are going to do it? We are not going to do it physically. That's the reason. Let's achieve this through virtually in lab. Okay, how to do it? Simply the way we created one test virtual machine, then I'll go ahead and create one virtual machine for ESXi. Okay, I'll go ahead and next. This is for only lab demonstration purpose only. In office, you should not do this. Okay, so there is a folder called as Mint software. So I'll rename it as something later. I'll go to VMware, and here one of the ESXi is stored. Okay, let me delete this one. This is not required. Okay, I'll go ahead and use this. So it has automatically detected that what is there inside of that ISO file. Okay, then let's go ahead and click next. Let's give the name. So generally I'll give lab number XX and ESX1. Okay, this is my host name. I'll go ahead and click next. I'll use one operating system only. And then if you want hardware, then you can go ahead and 16 GB or something like that, you can create it. Okay, I'll go it for 8 GB. Then do you need, how much RAM you need? I'll say that I need 4 GB of RAM. This I'm doing it on this one, right? For you, it will be installed on bare metal kind of thing. Then I will do it. I want these many processor, 2 processor, 1 processor. Okay. Cores per processor you can go ahead and select based on your hardware. Also make sure that you are enabling on your hardware BIOS, you are using VT technology if you are using Intel, and AMD RVI AMD slash dash V in your AMD platform. Then from here, let's go ahead and make sure that you have the ISO file available. Yeah, and it's in connected state. This part will not see now. Let's go ahead and make it as host 1. Okay, and then I'll click close, and then I'll go and finish it. So what's going to happen now? The ESXi will come into play, and it will go ahead and boot himself through BIOS and all those things, and then this operating system install will get started on your physical device. This I'm showing you on hardware, on the virtual device. Okay, so this way your installation will complete. In parallel, what I'll do, I'll go ahead and log on to our vCenter. Okay, so this is our master vCenter. Why it's not allowing me to log in, I don't know, but I'm using the temporarily this one. Okay, I'm using another browser. This is my vCenter, so don't get confused here. I could have done this on separate screen, but for you guys, I am doing it in front of you. Okay, so here I am running my minimum lab, so my UPS will not get overloaded. Okay, so here I simply with the help of a script, I deployed the in lab 11, I deployed 2 ESXi. These are same ESXi, the one which I am installing there. See, you'll get the console, the way you are going to access your physical hardware and connecting the console cable. Okay, then you will get this output. Same way you are going to get here as well. I'll come back to this screen. Then you can see that your ESXi is getting loaded. I'll go ahead and shut down this virtual machine as it's not required. I'll go ahead and delete it as well, because just this was for demonstration purpose.
and your ESXi is getting loaded. So what is this ESXi is? This is type 2 hypervisor which is getting installed on your hardware. So let's see how much time it will take. So once this is done, okay, I'm doing you this process through scripting for you guys. So you'll get your ESXi in this format. Okay, you'll see your ESXi as a virtual machine like this. Then simply you can go ahead and take a console. Simply you will click there and you'll get the console, and then you can do some configuration. What configuration you will do? You'll do basic configuration by giving IP address, subnet mask, gateway, DNS name, and all these things, settings, DNS IP primary and all these things, because this is a machine and this requires basic minimum configuration. So now it is in disconnected state. Why? Because there is some problem. Yeah, I think because of electricity issue, the vCenter is gone now. Okay, so how I'll check, make sure that why it's gone. I'll run one of ping towards my server. It's there. Then why it's showing disconnected? Okay, I'll let you know. Because this is created on one of hardware which is in shutdown state. It's created on 106 server, and that server I have not booted because of that issue. Okay, so what I'll do is quickly I'll go ahead and spin up one lab for you guys. So that lab will be something 23. Okay, lab 23 I'm going to spin up. So here I'll type the name as 23, and here also 23, and simply I'll run it. I think we So need to here change the host address. host address will be 102, and also we need to change the data store as well. Data store of the host 102. So 102, I'll go to data store. So what is data store? All these things you guys are going to see soon. Okay. So here I'm going to give the new data store, and then I'll ask this device. See that VM is not available. I'll ask this script to go ahead and this vCenter, I'll instruct that go ahead and install something on your 102 using this data store. So it will go ahead and use it. So why it's not deploying? Okay, unable to communicate. Let's try one more time. Okay, so the template, whatever we have, the template is saved on someone's hard disk, which is in down state. So there are many things which I have to take care in background, but leave it. This is the template which it will go ahead and copy. So this template itself is not available. Then how come it's going to install this one? Okay, I'll come back now. Let me go ahead and boot that device itself. 106. 1 minute. Okay, so I booted up this 106 server because it has some dependency. So till time it boots, let me go ahead and explain you how this is going to work. So once you booted your this one, then like Windows, you have to go ahead and complete the installation. You'll click enter, and then you have to press F11. Okay, so this will start continue the installation.
By default, 60 days or 1 year license is free for ESXi. So now it says that it is having one internal hard disk. I'll click yes, US. Let's give VMware as a password, VMware1. Okay. Then I'll click on F11. So installation will start. So what we are doing, guys, we are going to install this ESXi operating system on top of your physical device. Clear? Okay. So what this will do, whatever resources you have on this device, like RAM, okay, like processor, okay, and like your card, NIC card, okay, it will go ahead and take control of all three components. Even if you have more PCI cards, internal hard disk, this ESXi is going to take control of all these resources, and then it will distribute to virtual machines, whatever you are going to deploy on that device. Anything question about the ESXi? Okay, so let's go ahead and see how the installation will happen. And in parallel, my this one is also running 106. Let me check if it's 106 is available or not. This is a refresh button. So I'm not going to explain you what this console is because this is a separate topic. Let's go ahead and try to ping to 106. Yeah, it's pinging. Actually, it's actually booting up, and yeah, it's booted. So now what I'll do is, I guess this template is available. Okay, ESXi template. So where it is? It is there on 107, unfortunately, not on 106. Okay, but leave it. Next time I'll make sure that it's available on all devices. So these are the two ESXi which just be spun up, and I'm going to boot two of them. I'm going back to this hypervisor because I wanted to show you the installation, and this is how the installation is. Once your installation is completely, it copies from ISO to ISO file to your hard disk, then it will ask you to reboot, and then it will also disconnect your CD drive. Okay, the way in physical hardware we have same thing, we are also have attached to virtual machine. In virtual machine, if you want to disconnect anything or connect anything, you can do at any point of time. In our physical server, if you want to modify processor, simply shut it down, modify the processor. If you want to modify the memory, if you want to install more memory, shut down your physical hardware and then install more memory. In physical virtual machines as well, there is a virtual memory available, which is inherited from the parent box. What is parent box? What is inheritance? We'll talk more. Okay. So now this is booting up. In parallel also, we are also booting up this device, these two VMs. Let's go ahead and see how it looks like. So once you launch this, then it's already booted up. So once this installation get completes, okay, once this installation get completes, it looks like this. Do you see on my screen? Okay, so type F2 and you can go inside. The username is root and the password is VMware1. Okay, so now to this box we can go ahead and modify the password. Simply give your old password and type new password 2 times. Okay, first thing. Second thing is there is a one configuration lockdown mode. What is that lockdown mode is? If someone arrange or get access of your data center, he will simply connect the console to your server, and then he will put a password, and then he will do some configuration. In order to avoid that, there is a lockdown mode which will not allow to do that. The console mode will be totally disabled, and only the administrator who is sitting outside and accessing through UI is only possible. Third thing is configured management network. So let's go ahead enter of that. So first one is network adapter. So what is network adapter? Generally, what would happen, to your server, there would be two adapters. Generally, to servers, they will run minimum on two. But here we are in lab, so I'm using only one.
Okay, so do you guys want to use this adapter? First you have to give the consent here by saying you can have space bar to select and unselect. Okay, so here you have two nick cards, but I'm going to use only one only. VM nick means virtual machine nick card. Okay, so this is the hardware which I'm going to use, and it is having MAC address as well, and it's in connected state. I'll hit enter. Next I'll go to VLAN option. VLAN option means if you have management VLAN, then simply you can go ahead and give it to this one. So what is management VLAN? Generally you'll have the management VLAN which will allow you to do this. So I'm in lab 11, so I'm going to give management VLAN as a lab 11. This is how I configured in background. I'll tell you this later on, not now. Okay, so I'll type it as 11. Then I'll go to IP configuration. So your lab number is 11, so you have to configure IPs like this: 192.168.11. Okay, this will be your lab number. 11.101 you should give the address, and /24 would be your subnet mask. 192.168.11.1 will be your gateway. Okay, coming back to my paint here, I don't want to confuse you guys. So here what happens, you are I assigned one lab to you. Okay, I'll assign one lab to you. If you want to see that lab, then the lab number and all information is here. Let me go to that information. So what host name you have to give, what IP address you have to give, that everything is defined here. If you go ahead and see, I'm going to this is your master. Okay, so what you can do is these guys are not going to access it, so I'll go ahead and delete. For them it's not required. Or should I create a copy? Let's go ahead and delete. Okay, yeah, you can go ahead and use it. So suppose my lab is 13. Okay, so I'll go to lab number 13 here, and for me this is applicable. For my ESXi 1 and 2, I have to give these IP addresses. Always it's /24. Gateway will be 1. DNS will be this one. My VLAN will be 13. Okay, my storage address is 51. My DNS suffix is this one. Okay, my username will be root, and the password is 2-time VMware. You can have 1 time or 2 time. It's all up to you, but don't go beyond this one. Okay, so let's go ahead and see. So I'll go to this one. I'll say yes. My 11.101/24. IPv6 I don't want to use. Simply I'll press the space bar, so it will go ahead and disable. DNS configuration I'll go ahead and use the following DNS. I'll hit the space bar. I'll go to primary DNS. 192.168.1.51 will be your DNS. Okay, sorry, 1.11 will be your DNS. And alternate DNS, use internet one. Okay, so what is your host name? So in order to get host name, you will refer this device, Excel sheet. So you'll see your host name here. Simply copy this host name and try to ping it. Okay, it will resolve it to something. Okay, so that is 192.168.11 dot this one. So this will be 11. Okay, so it will resolve to 101. Do you see? So DNS entries are made. If you want to see, have a look at DNS entry, simply go to your DNS server. So whenever you are logging in, you are logging into DNS server only. Okay, for me it's a different device, but for you guys, everyone is logging into the DNS server only. That is 1.11. So let me go ahead and log on to 1.11. I don't want to confuse you more, but I'll give control of DNS as well. So you'll come to know the inside how DNS works. You'll go to DNS, right click here, go to your DNS, and there are forward lookup and reverse lookup zone. You can go ahead here and see your ESXi host entry. Lab 11 ESXi 1 101, ESXi 2 102. Okay, this is how every engineer will go and do their host entries by themselves. If you are part of lab 23, if host entry is not there, then you have to go ahead and make it by your own. So how you'll make host entry for lab 13? Right click, name.
Okay, a record you have to do. Then what you have to type here, simply go to your Excel sheet, and from here type this one. Okay, so let's go to lab 23. Oh, who is the one? Mubin got lab 23, right? So what Mubin will do, Mubin will go ahead and access the this one, lab 23 ESXi1. He will go to DNS and then he will make that entry. So for Mubin, I'll do this one entry. IP address will be 192.168.23. Okay, 23.101 for ESXi1. Create the reverse PTR record as well, so it will also create reverse lookup. Okay, I'll click OK. So there is a warning. Why? Because reverse lookup was not created by me already. So this is this lab number we are going to use first time. So here you can go ahead and create your the reverse lookup as well. So this is just add on. If you want me to do, it's a matter of minute only. So for Mubin, reverse lookup zone is not available. So what he will do, he will go ahead and create reverse lookup zone for him, lab number 23. Because we are not going to use existing labs, then that's the reason we have to do it. So I'll go to lab 23. So this entry was not created perfectly. So what I'll do is I'll go ahead and delete. Right click this one and I'll give the IP address. Okay, I don't want to make it complex, but this is how it works. I'll come back. Okay, I'll go to my server, not yours. So now this information is given, primary address and all these things. Custom DNS suffix. So our suffix, this one is domain name is cloudsnetworking.in. Okay. Once you are done with all these 5 to 6 information, your ESXi is ready. Go ahead and escape, and then you can go ahead and apply the changes. So say yes, why? It will go ahead and reboot it one more time. So now your ESXi device is fully prepared. Not fully prepared, but it's prepared to take control. So this is your one box. This is how compute engineer goes and they connect the pen drive and CD drive, and then they install the ESXi. So this is the first stage which we have completed by installing the ESXi. So for you guys, connecting the pen drive and installing, I'm going to do it. And I'll ask you guys to do the remaining configuration by assigning the IP address and VLAN. Once you are done this, then you can go ahead and create for second one as well. Okay. So here I am doing it for my lab 11. So whenever you will go ahead and see the recording and you will do it for yourself. Okay. So now I'm going to do it for ESXi 2. Okay. This is my ESXi 2. I'll type F2 and then the password will be VMware. So now I'm going to do it fast. So I'll go ahead and configure my management network. I'll go to network adapter. Okay. I need only one. I'll go to VLAN. I'll type VLAN as 11. Okay. The IPv4 configuration as I'll go ahead and use static 192.168.11.102. Okay. My subnet mask would be /24. My gateway would be 192.168.11.1. So from where I'm referring this all information from my Excel sheet. Okay. So where is your Excel sheet? Simply go ahead and see this is your Excel sheet and you'll get that info. So my lab is 11, so I'm going to refer these things. Okay. And if I'm going to install my vCenter, then I'll use this one. Okay. Let's move ahead. Once this is done, I'll go to IPv6 and then in IPv6, I'll disable the IPv6 because I don't want. I'll go to address and I'll type 192.168.1.11 and internet DNS like this. I'll give the host name as lab 11 ESX2. Okay. And then hit this one and let's go ahead and do the suffix cloudsnetworking.in. Once you are done with both, so now your two devices are ready.
Okay, this is your first device and this is second. So let's go ahead and ping it from your server. Okay, I'll go ahead and try to ping it. Let's see if it's pinging. It's not. Okay, any idea why it's not pinging? I guess while entering the VLAN number or this one, I entered as 13 instead of 11. Configured VLAN number, do you see 11? So it's correct only. Okay, so from here I'll come outside. Purposefully I have not, now this is your virtual machine. Okay, so purposefully I have not marked it as a trunk. So this is your virtual machine. You can go ahead and modify it. So what I want the configuration, upstream configuration. See, this is my switch. To this switch, the one port is connected. Okay, and or both the servers one port is connected. So you have to make sure that this is connected to trunk link, and on switch it's also connected to trunk link. Okay, if you go ahead and see here, this is your virtual machine. This is a summary of your virtual machine ESXi. You can see that it's in default network. So you have to move this to trunk. Okay, I'll go ahead and do it. Edit, and then I'll make it as a trunk. So why, how, from where these values are coming and all those things, I'm going to do it later, not now. Okay, so soon you'll get familiar with all these things. So here you can say that you are learning the background, front end and back end, both the things. Okay, so I'll go to ESXi2. There also I'll go ahead and modify the network card interface to trunk. Okay, it's not in, it's trunk means, see, I told you there is an access switch and distributed switch, which I'm going to explain once this installation is done. Okay, so see, now let's try to ping it. Ping will should work. 11.101. See, ping is working. So it means what you have done, you have configured your both the devices 101 and 102 in network. Okay, and this is my Cisco switch, which is having the SVI. Okay, and which is acting as a 11.1 as a gateway. And I'm connecting here somewhere, so I'm able to ping because of that reason. Going back to this point, I'm going to stop this one. Let's see if second one is accessible. So second is also accessible, you can say, or not. First time it will take time, but it should, yeah, it's working. Okay, so both the devices are reachable now. So what is my expectation from you is tomorrow you go ahead and log on to this server. Okay, .11, or today anytime whenever you are free. Then what you can do, simply you can go to your this VMware workstation. From here you can click on master vCenter, or simply from here go and connect to the virtual server. Okay, from here you can go to and connect to the server, and here you can select as a master vCenter and give the username and password. Okay, for username and password, refer your sheet. In that sheet everything is mentioned. You can use this master vcenter.mint Pune and master console and this password. Fine, so let's go ahead. You can go ahead and click on connect, and it's there now. So simply go to your lab only. You have this access, limited access, because you don't know how my master vCenter is working. So chances are you will do something bad to the device. That the reason I opted this path for a few days. For initial time, later on you can do it. Okay, so this is your device. So this way you can go ahead and configure it. Okay, any question? No, sir. Okay, so now suppose you have configured it. You got the console access here. From here you can make all the changes what I suggested. Okay, it's by default, it's null values. You can go ahead and select all these changes and you can make it reachable.
So from here, go ahead and try to access those ESXi. What is the IP? 1.192.168.11.101. Okay, let's go ahead and HTTPS to it. Then it will be prompted. So this is the UI mode. What is your password? It's VMware 1. Type your password. So now this is first time you are seeing the your physical server through this way. Okay, this console you are seeing, this I am seeing as a through UI. Okay, and before in yellow strip whatever you were seeing, that was there in DCUI, direct console user input and all these things. Okay, this mode is called as DCUI, which is nothing but the physical console. You can go to visit to that server and connect to the device, so you'll see like this. Okay, yellow and this gray. And if you want to access this that through the UI, then simply you can hit to that device on 101. You'll It will be presented. The first thing on host, it will you'll see here it you can go ahead and shut down this your ESXi. If you want to reboot, go ahead and reboot it. If you are not seeing anything, then you can refresh it. Okay, what CPU you have? So you have something 8 GB of CPU. You have 16 GB of RAM. So what I recommend you to go ahead and increase the RAM. Okay, this RAM is not sufficient. You need 32 GB of RAM here. Okay, so when you are going to do, once you do the vCenter installation, that time you are going to modify this memory. Okay, and this is your storage, which is 0 as of now. So this is the console. This is the VMware device. It's having 2 CPU. It's inheriting the uh, install means the wherever is installed, it's inheriting that configuration. Then out of 64 GB, the device has given 16 GB to this device. Okay, and this is the configuration by user means IP addresses which we configured through the black and white screen, yellow screen. Okay, so this is your nothing but your device. When it got installed, all this information is available here. Now it's time to create the virtual machine here. So what is virtual machine? On top of your server, where on top of this server, I am going to create one web server. So what I'll do, simply I am going to create a virtual machine here. Okay, and here on top of this, I am going to install the any of DNS server or DSCP server. So this is your first practical, installing the ESXi and then configuring the uh, server over that. How you are going to do it? Simply you are going to create the virtual machine. So in virtual machine, do you have ISO or you have OVA file? So what is ISO file and what is OVF and OVA file? ISO file is something which you used to get in CD drive and now you are getting in software. Have you used ISO file? Right? That is in software, right? Yes, Guys? yes, not so. Yeah. So we are going to use. So sometime what happen, somebody will go ahead and do it, and then he will do some modification, then he will export it and give it to you. So that is nothing but OVA and OVF file format. Okay, suppose VMware wants to give any server kind of environment to us, so VMware will go ahead and build that perfect environment his in his locality. He will export that and simply give it to you. You are simply going to import that as a virtual machine and it will plug and play. That is called as OVA file. Okay, but we are going to work with create virtual machine, and if you have any virtual machine saved, you can also register it back, which I'll show later. I'll go ahead and create virtual machine. So what name you want to give? So I will give a web VM1. Okay, so it says that okay, you want to have one virtual machine with web VM1. So what is the compatibility? What do you mean by compatibility? That on which environments this is going to run, on which VMware environment this is expected to run. So as of now, 8 ESXi 8 version is going on. Okay, so why we are seeing 7? Because I'm using 7 only. So below that, you want to run this virtual machines compatible with version 5, version 6, version 7. So we'll go for the version 7 for time being.
Okay, then in guest operating system, which guest you want to create, you want to install? I say Windows. So in Windows, do you want to install the server? Windows 32-bit, Windows 64-bit, 2000, Windows 7, what you want to install? So I want to install something. Let's not go for server operating system, it will take time. Okay, so let's go for Windows operating system, Windows 10 64-bit. Okay, let's go ahead and click next. I say okay. So it says I don't have any storage. So obviously if you don't have any storage, then it's going to, how you are going to save your VM? Locally it doesn't have any space. So what I'll do is I'll go ahead and cancel it. First let's do the arrangement of storage. So what is the arrangement of storage? If you go to this paint, I already told you there is no hard disk on your ESXi. Do you think there is a hard disk on your ESXi? No. No. Okay, so where is that hard disk is stored? Your hard disk is there outside of your environment, and you have to call it by IP or by any other info, iSCSI and all those things. Then from this, by sitting here, you'll go ahead and call to this hard disk HDD. So for this, I'm using a virtual hard disk. Okay, so don't go into that. Simply hit to the 1.51. This server, there is one more server I have, right? This server, this machine I'm going to use as a storage device as well. Dot 51. Have you seen the 1.51? So there is a one software called as Starwind. So this is acting as a hard disk. Okay, how much hard disk it's having? It's having something 62 GB of hard disk, then 400 GB of hard disk, and 200 GB of hard disk. So this hard disk we are going to call to that ESXi. How to do it? Let's see. I am jumping between RDP. Okay, so don't get confused. So this is the 1.11 is the RDP where you guys are going to work on. So first I'll go to storage, and then I'll go to adapter. So I'm going to have software iSCSI enabled. Simply I'll go ahead and save the configuration. Okay, once configuration is saved, then again click there and then add the port binding through which port we are going to transfer that storage configuration. So you have to select that yeah, I have only one port and I'm going to use this port only to reach out the hard disk. So this is how you have to give information here. If generally what happen, in production or any environments, you will have multiple exit interfaces. One will be used for backup, one will be for storage, one will be for production, one will be for management. There will be multiple paths will be there. So here it's asking through which path you want to go. So I'm saying that I want to use this. I have only one address only. Okay. Then second target is static target. So you can select that to which server you are going to hit. I'm saying 192.168.1.51. That is also written in your Excel sheet. Saber sir, Hmm? sorry to interrupt you. How many interfaces we can add for existing? Where? As you told, no, there is a multiple interface we can use, right? In iSCSI? This one here? Yes, Yeah, yes. actually, the thing is, if you use two, then it will jumble. So you can use multiple, but storage is a altogether different technology. They are not using our IP addressing. So, Shabi, could you please confirm? Are you using IP address base or you are having separate switches for storage? No, IP address base we are using. Only IP address So base. we Yeah. are using multiple Uh, interface over there. as we are using storage related server, like the server which is having 22 or 23 or 25 or 15 hard drive spaces in that. Mhm. Okay, so how many uplinks you will use for storage? One or two? One. One. Okay. Yeah. Okay, so let's use one only and go to dynamic target, and then you will select the my storage address. So that is 51. So let's go ahead and save that configuration. Once your configuration is saved, you have to go ahead and rescan it. So once it's rescanned, then it will identify that whatever is there on that device. Okay, so soon you are going to see that hard disk here.
See, now we got those hard disks. I was repeating, right? 200 GB, 62 GB, and 400 GB. Automatically, we got those three hard disks here now. Okay, you want to see it again? Let's go ahead and see. See, here, this is the my hard drive server. So these are three hard disks, 200 GB, 400 GB, and this one. They are having name as well. So you can go ahead and match it here. Okay, so you can see these names here. Okay, so we got hard disk now. So this server got hard disk. So where is the hard disk, guys? Hard disk is not there on this local server. Hard disk is there outside. So I'm going to create this virtual machine. So physically means it's running on this hardware, but its hard disk is here. Okay, so let's go ahead and create one virtual machine now. So how to create virtual machine? Now we are good with this one. Okay, so let's go to virtual machine and create a virtual machine. I'll click next, then I'll give the name as web VM1. Okay, I'm going to select the ESXi 7, the operating system as a Windows, and I'm going to install the Windows 10 operating system. So generally what I suggest you guys, don't go for heavy operating system. Let's go for the lightweight operating system, that is Linux. So from here, go ahead and select the Linux and select the this one, Debian 1064 version. Click on next. In which hard disk you want to install. So just go ahead and check the free space. Here is the free space 2 GB, and this one is having something 52 GB. I'll go ahead and click next. Okay. How much CPU you want to use for that device? So this is first time it will allow you because it's not in turn on state. Then how much memory you need? I'll go for 4096. Okay, multiplied by that hard disk. Okay, you will not have 7 GB of hard disk or 5 GB of hard disk. Simply, now you'll have network interface. Let's not concentrate here for now, and simply click on next and then finish. Okay, so this shell is created. The hard disk means the Linux is not created yet. Only shell is created. I'll go ahead and I want to give the this one. I want to give the hard disk to it. Sorry, how to boot it. Okay, so for that I have to give CD drive. So simply go ahead and click on ISO file. This is your CD drive. So this is having physical connectivity. This is having CPU. This is a virtual machine. CPU, memory, hard disk, your ESXi controllers, USB device, network adapter, CD drive, your video card. If you have video card means your NVIDIA card. Okay, I want to use ISO file. So where is your ISO file is there? Okay, so here if you see, then there is a slacks ISO file already. Okay, so these are the VMs which are created by other engineers already. So I have to delete it. Okay, I'll vacate it soon. So whenever you are creating anything, create with your lab number. Okay, don't create it randomly, otherwise I'll delete it without any confirmation. So you are connecting your, just here connect and disconnect. Do you want to connect your CD drive? Yes. You do want to disconnect it? Disconnect it. So this way you can tweak it. So now I have created my first server, Linux server, and I'm going to boot it up. Any question, guys? Okay, once this VM installation is done, then we are going for interesting thing. That is something I'll explain you. So something is happening here, something is not good. I'll go to edit, and then here what happened, mistakenly I uncheck this one. So just go ahead and check it. Yes, and then restart it. Okay, how to restart? Simply you can go to action, power, and do the restart. Reset. Okay, so we are going to start it again. So now your virtual machine is getting booted with the ISO file. See, this is lightweight operating system which you can go ahead and create. So what happened, in production, you'll create one server. Okay, so if server you allocated some X amount of GB of RAM.
you want to increase it. So simply what you can do it, you can shut down that device and shut down that virtual machine, not server. Okay, so let's go ahead and take this example. Suppose this is your VM, Linux VM, server 1. Okay, web server 1, and current hard disk is something 8 GB. You want to increase it to 32 GB. How you can do it? Let's go ahead and see. Even you want to increase the CPU from 1 to 2. Okay, then let's go ahead and do it. So this is your operating system and it's in ready state now. Okay, suppose client requirement came and you want to increase the hardware. So first see that how much memory you are having. Then you can go ahead and shut this down, power off, and then simply you can go ahead and edit it, edit setting, and then you can simply increase the RAM from 2 GB to 4 GB here. Hard disk you can increase or add new hard disk. If you are having Windows running machine in running, you can add the hard disk. Okay, if you can see it here, I do have something C drive. If you add a new hard disk, then it will be a E drive. Okay, so that is hot swappable, you can say, means on running you can go ahead and do it. See, after installation it got disconnected, but let's connect it back again and then power it off. So now you are having 4 GB of RAM instead of 2 GB. How much RAM we have? 4 GB. Fine, guys. So you will install ESXi and VM later on by seeing this video. So if you have any problem, you do let me know. So how you are going to do it? Simply you are going to access the this jump box. How you are going to access? In lab information, not here. From the, you are going to take RDP. You can try it parallelly. Once you have taken RDP, then you will be landed on this one, 11 server. Then go to VMware, and as per the provided information, connect to this master vcenter.cloudsnetworking.in and give the username and password. Then you will be prompted like this. Under your lab folder, you will see your lab information. Okay, if your lab is 24, go to 24, you will plus it, then you will see some folder ESXi 1 and 2. For example, lab 11, I'll click on lab 11 and then I'll do that configuration which I did. You do yourself. So your ESXi will get ready. How you will check your ESXi is ready? By pinging or by taking control through UI. Any question, guys? No, sir. Okay, so see, this way you are going to getting, means you are getting use of it, means used to virtual machines, how virtual machine behaves. Okay, so this is not enough. Creating virtual machine is not enough. Once you have vCenter, then you'll do lot many things. Okay, I have not shown you networking and storage and other parts yet, but this is how you can do it. Second thing, once your ESXi and virtual machine installation is done, then we have to move for vCenter. What is vCenter? We'll do the installation in next class. Okay, so now meantime I have to explain you other things as well. So let me explain logical switch. Okay, give me 1 minute. Should we take break, guys? Yes, sir. 5 minutes. Yeah, after I will take 10 minutes of break, and after break I'll go ahead and explain you logical the switching virtual switches. Okay, yeah. Okay. So when we'll meet at 10:35, or yeah, 10:35 is fine. Yes. Okay, let's come back at 10:35. 7 to 8 minutes of break.
ओके गाइस, आगे वापस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, राजू मूविंग. Yes, sir. I am here. ओके, तो मैं अभी आपको बताया कि भाई हाउ टू इंस्टॉल योर ESXi. ESXi का तो इंस्टॉलेशन मैं कर दूंगा. ठीक है, कैसे करूंगा इंस्टॉलेशन? फॉर एग्जांपल लैब नंबर 24 है अभी, तो एक्चुअली वो बंद है, लाइट गई हुई है, तो वो सर्वर अभी अवेलेबल नहीं है. आई विल डू इट लेटर. ठीक है, तो वंस इंस्टॉलेशन इज डन, यू गाइस कैन गो अहेड एंड एक्सेस योर वी सेंटर. यहाँ से जाके मैनेज में से जाके, सॉरी, स्टोरेज में से जाके यू ऐड एडेप्टर followed by this video and give the IP address, so your storage will be available. एक VM भी बना दो. ठीक है, अब इस VM को आप शट डाउन भी कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज पावर ऑफ एंड रीसेट इज, जैसे किसी डिवाइस का प्लग ऑफ करते हैं ना, प्लग आउट करते हैं ना, उसको बोलते हैं पावर ऑफ. और रीसेट इज रीसेट, हार्ड रीसेट. जनरली अगर सॉफ्ट रीसेट नहीं हो रहा है यहाँ से, सो व्हाट वी प्रिफर, इसको शट डाउन करना, मतलब इसका मतलब है ग्रेसफुल शटडाउन. ठीक है, और यहाँ से किसी डिवाइस का पावर अनप्लग करना डेस्कटॉप का, इसका मतलब हार्ड शटडाउन. सो ये पावर ऑफ का मतलब वो है. ठीक है, तो यहाँ से आप एक्शन में जाके यू कैन ऑल्सो डू शटडाउन, ग्रेसफुल शटडाउन. लेकिन एक VMware का टूल है, दैट टूल मस्ट बी इंस्टॉल ऑन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, देन ओनली दैट फीचर एंड फंक्शंस विल वर्क. ये टूल क्या करेगा कि ये टूल जाके VM में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और रिक्वायर्ड चीजें वो इनपुट वापस देगा VM ESXi. ठीक है, अगर ESXi को कुछ बात करना है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ESXi उस टूल को बता के then he will pass that instruction to that operating system, so it will shut down, reset and all those things. ठीक है, and perform the operations. प्लस आप इस VM का मॉनिटर भी कर सकते हो कि भाई कितना इस VM का स्पाइक है CPU. ठीक है, द वे वी आर डूइंग इन अवर टास्क मैनेजर, आप दिस मशीन, दिस इज नाउ वर्चुअल मशीन, तो इसका आप CPU भी मॉनिटर कर सकते हैं, इसका आप मेमोरी भी मॉनिटर कर सकते हैं, आप लाइव भी कर सकते हैं, आप पास्ट का 6 days 1 week वो भी देख सकते हैं. अगर आपका कोई सर्वर रिस्टार्ट हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा? सो अंडर मॉनिटरिंग आप जाके चेक करेंगे कि भाई लास्ट वीक में इसका स्टैटिस्टिक बताओ मुझे. ठीक है, आपका डिस्क का कितना यूज हुआ था, तो अभी तो आज ही शुरू हुआ है तो बता नहीं रहा है, लेकिन आपको सब बताएगा पूरा हिस्ट्री. ठीक है, उसका नेटवर्क कितना स्पाइक हुआ था, दैट इंफॉर्मेशन ऑल यूल गेट. ठीक है, इसके इवेंट्स भी जनरेट होते हैं. इस VM के साथ अगर आपने कुछ चेंजेस किए तो किसने क्या चेंजेस किए वो आपको सब बताएगा. यहाँ पे किसने पावर ऑफ किया था, किसने रिस्टार्ट किया था, क्या चेंजेस किए. इसके सेल लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर के लॉग्स अलग होते हैं. इफ यू आर यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लॉग में वो सेव करेगा, और इसके ऊपर से आप जितने भी चेंजेस कर रहे हैं ये सेव करेगा. ठीक है, जितने भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, लॉग्स एंड ऑल. ठीक है, तो नाउ लेट्स गो अहेड एंड मूव टू दी वर्चुअल स्विच. रेडी? I'll go Yes. ahead and set this up. Turn off. Yes. ठीक है, तो अभी क्या हुआ पता है क्या आपको? जैसे कि पता है कि भाई एक स्विच होता है. ठीक है, स्विच में कितने पोर्ट्स होते हैं राजू? स्टार्ट से लेके एंड तक बोलो, पूरे कितने पोर्ट्स होते हैं? डिपेंड करता है सर मॉडल पर. ओके, ठीक है, तो सबसे पहले कुछ 8 पोर्ट का होता है, चार पोर्ट का भी होता था, लेकिन 8 पोर्ट से स्टार्ट करते हैं अपन. ठीक है, 8 होते हैं, फिर 12 भी हो सकते हैं, फिर 24 भी हो सकते हैं, देन इट विल बी 48. Yes, 48 के 16, आगे 24, 48. ठीक है, तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्विच मॉड्यूल, नॉट होल स्विच. पूरे स्विच में तो 250 पोर्ट हो सकते हैं, 250 500 जितने भी है. एक मॉड्यूल कितने लंबा होता है? 48 पोर्ट्स का. Yes. ठीक है, तो उसमें Yes. और एक मॉड्यूल डालने आता है, वो 96 बना देता है उसको. ठीक है, तो वो उसमें अपने को नहीं पढ़ना है, दैट इज एक्सेप्शनल केस. जैसे सपोज आपको स्विच भी बाय नहीं करना है और ज्यादा पोर्ट भी चाहिए. ठीक है, तो जनरली तो क्या होता है पैनल ऐड हमारे, करते हैं. क्या बोलते हैं, चैट पैनल. क्या 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 नाम उसका? चैट पैनल, सैटेलाइट पैनल. पोर्ट सैटेलाइट. एक्सटेंड उसका क्या करने के काम लिए. है? पोर्ट एक्सटेंड करने के लिए. तो वो क्या करता है, यस सर. उसमें 4 पिन यूज होते हैं, तो ये पोर्ट 4 ऐड इसको करता यूज है. करता है. क्या करता है?
पोर्ट और ऐड होते हैं सर, 10 gig के पोर्ट से उसकी कनेक्टिविटी करके और पोर्ट ऐड करते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, सो दैट इज एक्सेप्शनल केस। तो अभी हम उसमें नहीं जाते, हम बोलते हैं कि भाई 48 पोर्ट का स्विच था। कितने पोर्ट का? 48। ठीक है, यहां तक तो सबको पता है कि भाई 48 पोर्ट का स्विच होता है। ठीक है, और स्विच का ऑर्डर ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट? ऐसे आपके ये होते हैं, और बाद में उसको अपलिंक्स भी होते हैं। क्या होते हैं उसको? अपलिंक 1 और अपलिंक 2। तो ये अगर स्विच है आपका, तो ये क्या होता है, ये आपके दूसरे स्विच को जाएगा। और ये अपलिंक्स जनरली आप ये पोर्ट से आप अपलिंक नहीं देते हो, क्या देते हो? अगर ये आपका जीबीपीएस है तो ये आप 10G रहेगा, तो ये 10G से लेके आप इसके 10G पे आप कनेक्टिविटी देते हो, करेक्ट? यस। ऐसे दो देना है तो दो दो, एक देना है तो एक दो। सो दिस इज कॉल्ड एज अपलिंक, एंड ये होते हैं आपके डाउनलिंक। ठीक है, अब क्या हुआ पता है क्या? नाउ वी हैव मूव्ड इट टू दी सर्वर। अब सर्वर के अंदर इफ यू आर हैविंग एनी वर्चुअल मशीन, अब इसका क्या करने का? ठीक है, इसके लिए भी VMware made a provision that you can configure a virtual switch। ठीक है, तो यहां पर भी आप एक काम करो, स्विच डाल दो, और आपको बताना है कि भाई फिक्स पोर्ट रखना है 48 8 जो भी, या डायनेमिक रखना है। डायनेमिक रखेंगे तो आपने अगर 8 पोर्ट पहले होते हैं, अगर आपने 6 पोर्ट यूज करे तो उसको 16 कर देगा, फिर आपने और वहां तक 15 पोर्ट यूज करेगा तो वो उसको आगे बढ़ा देगा 8 पोर्ट से। वो ऑटोमेटिक स्केलिंग करता है क्या? ऑटोमेटिक स्केलिंग करता है इंटरनेट। ठीक है, उसका सेटिंग भी मैं बताऊंगा कहाँ पे। ठीक है, तो अब ये स्विच है, ये कहां पर है? ये क्या है बॉक्स? ये कौन बताएगा? शबीब, ये ब्लैक बॉक्स क्या है? Hardware device. योर हार्डवेयर फिजिकल सर्वर, राइट? तो अभी हम क्या करते हैं, ये फिजिकल सर्वर के अंदर जनरली मैं अभी तक ऊपर बता रहा, अभी मैं अंदर बताता हूँ, ठीक है ना? तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। अब ये वर्चुअल मशीन को मुझे यहाँ पे एक कोई सर्वर है उसका, उसके साथ कनेक्टिविटी देना है। ये ऑरेंज वर्चुअल मशीन जो कि वीलैन सपोज 10 यूज कर रहा है, इसको इसके साथ देना है। और मैं क्या करूंगा कि भाई मेरा जो सर्वर है, ऑब्वियसली मेरे सर्वर को निक कार्ड रहेगा, तो उसको बोलते हैं पी निक, फिजिकल निक कार्ड। ठीक है, तो ये फिजिकल निक कार्ड को मुझे क्या करना है, ये फिजिकल निक कार्ड मैं सीधा लूंगा और यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा ये स्विच इसको किधर भी। ठीक है, और इसको मैं एज अ ट्रंक कॉन्फ़िगर करूंगा। जनरली कोई एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर करता नहीं। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सर्वर इज नॉट मीन फॉर ओनली वन नेटवर्क। सर्वर इज मेन टू कैरी मल्टीपल नेटवर्क इंफॉर्मेशन विथ मल्टीपल VLANs, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिजिकल कनेक्टिविटी तो मैंने कर दिया। अब नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर लॉजिकल। गॉट माय पॉइंट? आप फिजिकल सर्वर को फिजिकल निक कार्ड से फिजिकल स्विच को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब लॉजिकल कैसे करोगे? यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिकल कंसेप्ट नाउ। तो लॉजिकल कंसेप्ट ये है, आपने लॉजिकली VM तो बना दिया, आपने लॉजिकली इसके ऊपर तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो डाल दिया, आपने लॉजिकली इसको FTP सर्वर भी बना दिया और DNS सर्वर भी बना दिया। अब ये लॉजिकली आप कैसे कनेक्ट करोगे दोनों एक दूसरे को सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में? तो इसके लिए आपको यहाँ पे VMware बोलता है कि एक काम करो, एक स्टैंडर्ड स्विच बनाओ, ठीक है, और उसके अंदर पोर्ट ग्रुप्स बनाओ। क्या बनाओ? पोर्ट ग्रुप। और ये जब स्विच आप बना रहे हो, ये स्विच का अपलिंक जो है, इसका अपलिंक इसको मैप कर दो, राइट? ठीक है ना? तो ये आपने मैपिंग कर दिया, देन व्हाट यू डू, यू क्रिएट पोर्ट ग्रुप्स, स्मॉल स्मॉल पोर्ट ग्रुप्स अंदर बनाना है, ग्रुप्स बनाना है। तो रेड VMs के लिए बनाऊंगा मैं, ब्लैक ग्रीन VMs के लिए अलग ग्रुप बनाऊंगा, और मैं जस्ट लाइक VLANs में अपन टैग कर सकते हैं ना पोर्ट ग्रुप्स को। हाँ यस, अभी मैं क्या करूंगा, इसको टैग करूंगा VLAN से। so these port groups are not just as a VLAN number, they are having other capabilities as well. That's the reason they are called as port group. ओके, ये आपका बैंडविड्थ भी ट्रैक करते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड। ये स्टैंडर्ड तो नहीं करता है, और दूसरा और अच्छा स्विच है वो बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये बहुत सी चीजें करते हैं आपके। ठीक है, आपका प्राइवेट VLAN वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, बहुत से मल्टीपल टास्क है। बट एनीवे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो आप क्या करोगे, आपके वर्चुअल मशीन को यू विल गो अहेड एंड लेट्स यूज ऑरेंज कलर ओनली। आपके वर्चुअल मशीन को आप ये पोर्ट ग्रुप से कनेक्ट कर दोगे। कैसे कनेक्ट करना है वो भी बता देंगे, लेकिन यू विल गो अहेड एंड कनेक्ट। और इसको आप बोलेंगे कि मैं इसको टैगिंग देता हूँ VLAN 10 का,
कैसे देना है इसको, ऐसे VLAN 10, ठीक है। अब मैंने इसको टैगिंग दे दिया और ये ट्रंक से बाहर चला गया, ठीक है। और ये ब्रॉडकास्ट यहाँ पे भी हुआ, ब्रॉडकास्ट इधर भी हुआ, रीचेबिलिटी हो गया दोनों का। एनी क्वेश्चन? इसको आपने ट्रंक में डाल दिए और ये आपके 10 VLAN में है, ये यहाँ से बाहर ट्रैफिक निकला, वो ब्रॉडकास्ट को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुंच गया। ये VM से बात कर रही है, जस्ट लाइक सेम एज फिजिकल के जैसा अपन इसको पूरा कर सिंपल। सकते हैं स्विचिंग। अब एक काम करते हैं अपन, एक थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, एक राउटर भी लगा देते हैं। लगा दो राउटर, और ये राउटर को क्या करते हैं अपन, ये राउटर को इस स्विच से कनेक्ट करते हैं और इसको मैं ट्रंक बनाता हूँ, सब इंटरफेस बनाता हूँ, या लेट्स अज्यूम मैं वो सब इंटरफेस के चक्कर में अभी नहीं जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने ये 10 नंबर के VLAN के लिए एक एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे, और इसको मैंने IP दिया है 1.1। तो ये बच्चों ने जितने बहुत बोला। फिजिकल और वर्चुअल है सबका गेटवे वो 1 रहेगा ना फिर? हाँ, ये .1 रहेगा, ठीक है, 10.1। तो क्या होगा कि इसको अगर कोई गेटवे चाहिए तो ये कहाँ आएगा, ये राउटर के पास आएगा। करेक्ट है कि नहीं? यस यस। ठीक है। अब क्या है पता है क्या, आपके पास दूसरा ग्रीन VM भी आ गया। अब क्या करोगे फिर? ऑब्वियसली यू विल कनेक्ट दिस ग्रीन VM, ओके। ग्रीन VM के पोर्ट को कनेक्ट करोगे और उसको आपको VLAN देना है, दैट यू विल गिव इट एज 20। फाइन। अब 20 आप इसको दोगे तो 20 VLAN आप यहाँ पे भी बनाओगे, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये स्विच पे 20 VLAN आप यहाँ पे भी बनाओगे, और आप क्या करोगे, ये यहाँ पे जो फिजिकल डिवाइस है उसको भी 20 VLAN में डाल दोगे। अब अपना टारगेट है ये दोनों, ये ग्रीन ग्रीन को कम्युनिकेट करना। तो ये 20 में ब्रॉडकास्ट करेगा, ऑब्वियसली ये ट्रंक लिंक है तो ये इसके थ्रू जाएगा, ट्रंक लिंक के थ्रू, और यहाँ से ये 20 VLAN फिर ट्रंक के लिंक के थ्रू जाएगा और डेस्टिनेशन को रीच करेगा। एनी क्वेश्चन हियर? नो सागर राइट? सर, No, sir. ये स्टैंडर्ड स्विच है, इसका पोर्ट ये फिजिकल इंटरफेस को मैप करेंगे क्या? स्टैंडर्ड स्विच यस का पोर्ट ग्रुप, ये यस। मैपिंग मतलब क्या करते हैं? मैपिंग जब मैं इंस्टॉल प्रैक्टिकल जब मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पे मैपिंग बताता हूँ उसकी, तो क्योंकि ये ये दिस इज इंटर पार्ट ऑफ फिजिकल vCenter। हार्डवेयर को फिजिकल इंटरफेस रहेगा तो उसका क्या निक निक इंटरफेस ही रहता है क्या? हार्डवेयर को गिग, फिजिकल इंटरफेस रहता, निक इंटरफेस। आई टेक यू देयर, तो ओके, तो 1 वो मिनट। क्या में रहेगा, मतलब गिग या 10 गिग हाँ, गीग में इट्स सी, पोर्ट के? हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन इज योर्स। आपने 10 गीग खरीदा तो 10 गीग में रहेगा, 1 गीग खरीदा खरीदा तो 1 गीग में रहेगा, राइट। सो मैं ये आपको हार्डवेयर बता रहा हूँ ये कैसे है। ये देखो, ये आई गो टू माय vCenter, ओके। कहाँ है vCenter अपना, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली, यहाँ पर है। ये देखो, ये ESXi पे काम कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखे आपने एडेप्टर्स है, ये पहला लिंक है मेरा विच इज गोइंग, एंड दिस इज ट्रंक लिंक। अब ये VMX नेट 3 इसका अडेप्टर है, ठीक है। अब ये कितने GB है, ये GB है, ये आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड है। तो मैं मेरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 106 इस पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके चेक करूंगा कि ये कितना है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं दूंगा मेरा फिजिकल, दिख रहा है 1 GB है, लेकिन सर्वर का 40 GB होता है। कितना होता है समझ रहे हो ना? अब मेरे ये हाँ घर के हाँ मशीन है तो 1 GB इज फाइन, मेरा स्विच भी 1 GB है। इमरान, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ हाँ, वो इंटरफेस आगे अपन वो स्विच में लगाएंगे तो वो स्विच का इंटरफेस एक विलान का पार्ट बनेगा क्या, मतलब एक करेक्ट विलान में डालेंगे स्पेसिफिक? करेक्ट। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। वापस से बताता हूँ। ये तुम्हारा फिजिकल हार्डवेयर है, फिजिकल हार्डवेयर को वापस से 1 मिनट, हाँ। देखो, ये तुम्हारा फिजिकल हार्डवेयर है, घर को लाए वाला सर्वर कंपनी ने लेकर आया, ठीक है। और ये तुम्हारा फिजिकल स्विच है। अब तुम कनेक्टिविटी कैसे करोगे? ऑब्वियसली आप एक केबल लोगे, फिजिकल हार्डवेयर को लगाओगे और फिजिकल स्विच को डाल दोगे। इतना ही करते ना अपन। अगर तुम्हारा ये रहा 1 GB, 1 GB तो नॉर्मल मशीन्स होते हैं, ठीक है। ये रहा तुम्हारा 10 GB और ये रहा 40 GB,
काम करेगा? नहीं, वो 10 का ही एक्ट करेगा वो। 10 का ही ऐड करेगा, काम करेगा, लेकिन इट विल लोअर टू 10 GB। नहीं, वो ठीक है, को निगोशिएट करके 10 ही करेगा वो दोनों साइड। हाँ 10 करेगा ना, इट विल नेगोशिएट 10 पे आएगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, इधर से भी 40 चाहिए तो अच्छे से फेयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट योर फिजिकल बॉक्स टू ये स्विच। एनी क्वेश्चन इमरान? वही वही कंफर्म करना था, वो विलान में डाल देंगे ना 40 हाँ, 6 पोर्ट से। आपको एक्सेस करना है, ट्रंक करना है, ये आपका कॉल है। ठीक है, जनरली ट्रंक ही करते हैं। क्यों ट्रंक करते हैं? क्योंकि इस बॉक्स में एक ही तरीके का वीएम नहीं आने वाला है, ब्लैक भी आने वाला है और रेड भी आने वाला है, अलग अलग आने वाले। अभी दोनों वीलान को मैं एक वीलान से कैसे बाहर लेके जाऊंगा? ऑब्वियसली आई हैव टू यूज ट्रंक। अगर वो फॉर कोड को एग्जांपल, ट्रंक ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सपोज फॉर एग्जांपल दो स्विचेस है आपके पास, तुम्हारे पास दो स्विचेस है, दो स्विचेस है और तुम्हारे पास यू आर हैविंग मल्टीपल अलग अलग आपके पास वीएम्स है, फिजिकल मशीन है, लैपटॉप से कनेक्टेड टू दिस स्विचेस। अब यहां से तुम एक तो ग्रीन ट्रैफिक लेके जाओगे या ब्लू ट्रैफिक लेके जाओगे इफ यू आर यूजिंग एक्सेस पोर्ट। तो तुमको क्या करना है, एक ही लाइन से अगर दो नमूने का ट्रैफिक लेके जाना तो क्या बनाना पड़ेगा इसको? ट्रंक। सेम वे सर्वर के बाहर, अगर सर्वर के अंदर अलग अलग वीएम्स यूज करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू हैव दिस ट्रंक ओनली। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो कहां तक आए अपन? गेटवे यहाँ पर है, ये ऑरेंज, ये ऑरेंज को पिंग कर रहा है, ये ग्रीन को पिंग कर रहा है। एनी क्वेश्चन गाइस? नो राइट? No, ठीक है, अब ये मैं स्विच के दर्शन कराता हूं तुमको किधर है। ठीक है, यहाँ पे आओ, हमारे होस्ट पे, किधर है ये होस्ट पे, यहाँ पे जाओ नेटवर्किंग में। ठीक है, यू विल गो टू दिस वर्चुअल स्विच, आपको स्विच मिल जाएगा। ये आपका वो स्विच है, दिख रहा है स्विच? ये आपका वो स्विच है, वर्चुअल स्विच। ठीक है ना, ये स्विच को ये बोलेगा कि भाई ये इतना ही स्विच है आपका, ये दिख रहा है येलो बाउंड्री दिख रही है, ये आपका स्विच है। ये स्विच को एक पोर्ट ग्रुप है वीएम नेटवर्क और दूसरा पोर्ट ग्रुप है मैनेजमेंट नेटवर्क। एक है 0 विलान आईडी से टैग है और दूसरा 11 विलान आईडी से टैग है। याद है जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो हमने एक विलान दिया था मैनेजमेंट को 11, सो उसने मैनेजमेंट पोर्ट ग्रुप ऑटोमेटिक बना दिया। अभी हमने बाद में कभी पोर्ट ग्रुप बनाए नहीं, तो अभी वो 0 विलान पे चल रहा है। बाय डिफॉल्ट सिस्को कौन से विलान पे चलता है? नेट विलन 1 1। 1 नेट। राजू, सिस्को कौन से विलान पे चलता है और वीएमवेयर कौन से विलान पे चलता है? एनी आइडिया बाय डिफॉल्ट? VMware 0 दिखा रहे हैं सर यहाँ पर। VLAN 0। या वीएमवेयर 0 पे चलता है और सिस्को 1 पे चलता है। 1 पे। ठीक है, डिफॉल्ट विलान उनके। तो ये देखो यहाँ पे डिफॉल्ट बन गए। अभी ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों भी पोर्ट ग्रुप्स, अब इसके पीछे कितने भी वीएम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे मैंने वेब वीएम 1 बनाया ना, 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पूरे VLAN they will get tagged to this VLAN ID whatever and then they will go through this path to outside world, और यहाँ पे आपका फिजिकल स्विच से जाके वो कनेक्ट हो जाएंगे। ये ट्रंक लिंक रहेगा आपका, जनरली ट्रंक ही करते हैं, कौन ये करता है। ठीक है, तो इसमें मैं एक काम करता हूँ और एक VLAN बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा? ये देखो बाय डिफॉल्ट इसका MTU 1500 होता है। ठीक है, इसमें देखो 1920 पोर्ट्स है टोटल बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये आपका CDP और LLDP दोनों भी सपोर्ट करता है। CDP जनरली वी यूज। ठीक है, कितने VMs है वो बताता है कि भाई मेरे पास कितने वर्चुअल मशीन्स है। कौन बता रहा है? ये पोर्ट ग्रुप, ये पोर्ट ग्रुप बताता है कि मेरे पास कितने VMs है, काउंट बताता है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बीकॉन का वगैरह काम बाद में है, अभी नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग पॉलिसीज है, फेल बैक पॉलिसी वगैरह, कुछ गलती हो गई तो सिक्योरिटी पॉलिसीज। ठीक है ना, ये अभी इसमें नहीं जाते हैं। ट्रैफिक शेपिंग भी एक ऑप्शन है कि भाई आपको कुछ ट्रैफिक को लिमिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन नो वन इज लिमिटिंग नाउअडेज। ठीक है, सो दिस इज योर स्विच। अगर आप वापस नेटवर्किंग में जाएंगे
तो मैं क्या करूंगा, स्विच में एक पोर्ट ग्रुप ऐड करता हूं। तो पोर्ट ग्रुप को नाम मैं देता हूं कि भाई दिस पोर्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज VLAN 10 फॉर कस्टमर XX। और यहाँ पे मैं जाके उसको नंबर देता हूँ VLAN 10। तो कौन से स्विच में बनाना है, ऑब्वियसली लिस्ट डाउन में एक ही स्विच है, बस इतना ही बनाता हूँ, VLAN 10 आपका बन गया। अब वर्चुअल स्विच में जाएंगे, स्विच के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको VLAN 10 दिखेगा, दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई VM नहीं है। अगर मुझे वेब VM को VLAN 10 में लाना है तो मैं क्या करूंगा, वेब VM में जाऊंगा, मैं इसको एडिट करूंगा और इसको बोलूंगा कि भाई तू एक काम कर, तू 10 पोर्ट नंबर में चला जा। इसका जो नेटवर्क एडाप्टर है मैं उसका VLAN कनेक्ट कर दूंगा 10। तो अब क्या हो गया इसका, ये यू विल गो टू नेटवर्किंग, वर्चुअल स्विच में आप जाके देखो, देखो ये VM कहां पर आ गया, 10 नेटवर्क में आ गया और ये VLAN यहां से हट गया। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आपको करके देखना है। सो कमिंग बैक टू दिस लॉजिकल स्विच कंसेप्ट, अब ये पिंग करेगा इसको, ये ऑरेंज पिंग करेगा ऑरेंज गेटवे को और ग्रीन पिंग करेगा ग्रीन गेटवे को, .1 20.1। ठीक है, अब इसमें अंदर प्रॉब्लम क्या है, सब अपने अपने गेटवे को पिंग कर रहे हैं, सब चल रहा है। अगर प्रॉब्लम इसमें, ये हाँ, फिजिकल राउटर डाउन गया तो फिर बाकी वर्चुअल भी इधर का होगा ना फिर डाउन? नहीं, फिजिकल राउटर अगर डाउन जाता है, मैंने अभी NSX नहीं बताया, ठीक है, आई एम देयर ऑन कंप्यूट ओनली। अच्छा, ठीक है, ओके। अगर ये फिजिकल राउटर डाउन होता है तो तुम क्या करते हैं, यू विल आल्सो हैव अनदर HSRP रन करके दूसरा राउटर भी तुम स्पिन अप कर देते हो, ऑलरेडी होता है, तो वो क्या करेगा, दूसरे इसको ट्रैफिक चला जाएगा। HSRP.1 बीच में रहता है और HSRP काम करता है, करेक्ट? यस। ठीक है ना, तो आपका ऐसे ट्रैफिक चल रहा है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है कि पूरा ट्रैफिक नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ याद है? यस। तो नॉर्थ साउथ का ट्रैफिक क्या होता है कि अगर ऑरेंज विलैन को सेम बॉक्स के अंदर बैठ के ग्रीन विलैन को अगर एक दूसरे को बात भी करना है, आर दे अलाउड? नो। नो। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन ऑफ राउटिंग इनसाइड ऑफ दिस बॉक्स। एक तो ये बॉक्स को आपको अंदर लाना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल है, कैसे आएंगे अंदर? ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, देन वी हैव टू ऑप्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है, तो अभी उधर नहीं जाते अपन, राउटिंग पार्ट में, स्विचिंग पार्ट ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट स्विच, तो स्विच के पूरे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सबको बाहर जाना पड़ रहा है और सबको फिर इवन दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, हर टाइम बाहर जाएंगे, हर टाइम अंदर आएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे फिर, उसका सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गया। अब उसमें दूसरा और एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है और दूसरा? कौन बताएंगे, सभी भाई? और दूसरा प्रॉब्लम स्टैंडर्ड स्विच में कि अगर आपके पास मल्टीपल ESXi है, मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स है, तो ऑब्वियसली सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको हर सर्वर पे लगेगा। तो फिर मैं सपोज राजू को काम दे दिया कि भाई हमने 4 सर्वर नए लाए, एक काम करो, सब 4 सर्वर पे जाओ, स्विच बनाओ। ठीक है, और हर स्विच में 3-3 पोर्ट पोर्ट ग्रुप बनाने रहेगा। तो राजू ने क्या किया, 10 को 20 कर दिया, 20 को 10 कर दिया, ये चलेगा यहाँ पे? सर अगर जस्ट लाइक अपन स्टैगिंग के टाइप में किए इसको तो सिंक्रोनाइज हो जाएगा ना? नहीं, किसका स्टैकिंग, लॉजिकल स्विच को कैसे स्टैकिंग करेंगे, वहां नहीं। ऑप्शन है ही नहीं। एक लॉजिकल स्विच दूसरे लॉजिकल स्विच को कनेक्ट ही नहीं होता है। ओके। ये तो होस्ट के अंदर है ना तुम्हारे, हम्म। ये नए नए 4 सर्वर डाला मैं, फिजिकल सर्वर्स, और तुमको टास्क दिया है कि भाई ये ESXi इंस्टॉल करो और ये जैसे कॉन्फ़िगरेशन था वैसे ही सबका कर दो। यहाँ पे जाओ, सब पे एक एक स्विच बनाओ और उसके अंदर VLAN 10 20 और 30 3-3 पोर्ट ग्रुप बना दो। तो तुमने क्या किया, पहले में तो अच्छा बनाए थे, दूसरे के अंदर क्या किया, स्वैप कर दिए, 10 को 20 डाल दिए, 20 को 10 डाल दिए। समझ में आ गया? अभी दूसरे इसमें सपोज तुमने गलती कर दी है, तो अब क्या क्या करेंगे, क्या अभी ये प्रॉब्लम है ना। इन्होंने क्या किया, नाउ दे केम अप विथ समथिंग कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्विच। क्या बोलते हैं इसको? दे केम अप विथ अ कंसेप्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। आप एक बार स्विच बनाओ, हम पूरे जितने भी ऐड रहेंगे आपके क्लस्टर में सबको हम बना देंगे। तो ये छोटे छोटे बॉक्स है, ये है स्टैंडर्ड स्विच, ये लंबा जो है वो है
आपका डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। आप एक में पोर्ट सिर्फ 3 बार 3 पोर्ट ग्रुप बनाना है, ये सबको जाके बोलेगा कि सब अपना अपना 3 बना दो। गलती होने के चांसेस है क्या? नहीं। तो इससे ये वर्जन इनहेंस हो गए। ठीक है, अब ठीक है, तीनों में बना दिए, इसका भी प्रैक्टिकल तुम करने वाले हो, इसका भी करने वाले हो और इसका भी करने वाले हो, सिर्फ कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि पहले ये तो अच्छे से चल रहा था, लेकिन मेरे पास अगर ये डिवाइस आ रहे हैं जा रहे हैं तो हर बार मेरा कैपेसिटी नहीं है कि भाई हर एक में बनाते बैठूं। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एक ही बार स्विच बनाऊंगा तो जो सब पे जाएगा, लेकिन इसके लिए वी सेंटर जरूरी है। व्हाट इज वी सेंटर, विल टॉक लेटर। ठीक है, सबर सर, ये बाकी के जो बनाए तुमने आगे के स्विचेस, ये हार्डवेयर स्विचेस है क्या, ये सेक्सर होज बनाए? सब लॉजिकल शुरू हो गया, ये जितने भी मैं नहीं नहीं बॉक्स के नहीं, अंदर ब्लैक बॉक्स जो बनाए तो वो हार्डवेयर स्विच नहीं है, वो सर्वर है। सारे सर्वर सर्वर। हाँ, हार्डवेयर तो उतना तो रहेगा ना हार्डवेयर। तो हर एक अलग अलग हार्डवेयर को एक ही स्टैंडर्ड स्विच में मतलब मर्ज कर लेंगे तो? नहीं नहीं नहीं, हर एक हार्डवेयर के अंदर एक स्विच बनाएंगे आप, मर्ज कुछ भी नहीं करना है, सिमिलर करना है। देखो नहीं नहीं, वीलैन के अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बता रहे आप, जो लंबा बनाने वाला, हम्म, सभी इस पे आएंगे क्या? सभी अलग सभी इस अलग पे आएंगे, हार्डवेयर पे? सभी इस पे आएगा, लेकिन वो कैसे आएंगा? उसको क्लस्टर में डालना पड़ेगा तुमको, एक ग्रुप में बनाना पड़ेगा ना तुमको। सभी हार्डवेयर सर्वर को ना? हाँ, सबको एक ग्रुप में डालना पड़ेगा, वो ऐसे चमत्कार ओके। थोड़ी होगा, सबको एक ग्रुप में नहीं डालना नहीं, पड़ेगा। वही ना। ठीक है ठीक। देखो, सबको तुम ग्रुप में डालोगे ना तो सब क्या करेंगे, अपनी कैपेसिटी एक जगह करेंगे। सबके पास 10-10 सीपीयू है तो वो बोलेंगे हमारे पास अभी 50 सीपीयू है, करेक्ट। सबके पास 64 जीबी रैम है तो वो कितना बोलेंगे अभी, सबके पास 64 जो है जीबी रैम है तो कितना हो गया, 300 कुछ तो, 400 जीबी 300 जीबी उनके पास है। ठीक है, सो दे विल सम करेंगे सबका एक साथ। ठीक है, वो क्लस्टर में अभी नहीं पढ़ते, नए नए मैं वर्ड्स नहीं लाना चाहता तुम्हारे इसमें, बिकॉज थिंग्स विल गेट कंफ्यूज। ओके, सो अब भाई ने सिंपल क्या किया कि भाई ये बन गया मेरा स्टैंडर्ड स्विच, पहला था स्टैंडर्ड, ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच कौन बनाता है, वी सेंटर बनाता है। वी सेंटर कौन है अभी अपने को पता नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया, स्टैंडर्ड स्विच है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है, दोनों में थोड़ा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं होता है, जो भी डिफरेंसेस है विल टॉक अबाउट, बट इतना फर्क है कि भाई इसमें कम फीचर्स है स्टैंडर्ड में, और डिस्ट्रीब्यूटेड में ज्यादा फीचर्स है। क्या फीचर्स है, व्हेन जब मैं बनाऊंगा तो तब तुमको उसके टैब में ले जाके बताऊंगा। ठीक है, अभी भी बता सकता हूँ। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, कहाँ पर है, ये मेरा जो सर्वर है ना, मेरा स्विच देखो ना तुम, ये देखो मेरे स्विच कितना ये है, ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके अंदर देखो कितने पोर्ट ग्रुप्स हैं, ये देखो, VLAN 11, VLAN 10, VLAन 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने दिख रहे हैं ना। तो कंपनी भी ऐसे ही होते हैं, तो ट्रंक लिंक पूरे अलाउ कर दो, 4000 दिख रहे हैं। ये ऐसे होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। तो मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड बना दिया, लेकिन कितने दूर है वो यहाँ जाके बताएगा आपको कि कहाँ पे 102 और 106 ये चालू है, इसकी वजह से 2 बता रहा है, अदरवाइज 1 से लेकर 8 तक बताएगा आपको। ठीक है, अगर मैं एक बार यहाँ पे कोई पोर्ट ग्रुप बना जाता हूँ तो जितने भी इसके साथ एसोसिएट है सब में जाके वो पोर्ट ग्रुप बना देगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये सर्वर्स के बीच में ऐसे सिंक्रोनाइज होता है ना, मास्टर और स्लेव के जैसा। नहीं, पूरे सबके साथ एक साथ वो वी सेंटर जितने सबको फिजिकल सिंक्रोनाइज सर्वर थे करेगा। तो वी सेंटर को अपन मास्टर जस्ट लाइक अपन कंसीडर कर सकते हैं मास्टर, और बाकी सब स्लेव में नहीं रहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है, वी सेंटर एक अलग कंसेप्ट है। मैं वी सेंटर का कंसेप्ट अभी डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं अभी सिर्फ स्विच का कंसेप्ट करता हूँ, चलेगा, ओके। बिकॉज वो वैसे नहीं है मास्टर स्लेव वाला कंसेप्ट। ठीक है, इसमें आप स्टैंडर्ड स्विच में, आप डिस्ट्रीब्यूटेड में आप LSCP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, PAGP तो बंद हो गया, आप प्राइवेट VLAN बना सकते हो। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी अपना कंसेप्ट है, आप उसका नेट फ्लो चेक कर सकते हो कि भाई ये यहाँ से इसका नहीं क्या, पोर्ट मिररिंग का भी आप कर सकते हो, पैकेट स्निफिंग वगैरह वो कंसेप्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, इसका हेल्थ चेक कर सकते हो, आपका VLAN कितना, MTU कितना है। ठीक है, इसका टीमिंग कैसे है, फेल्योर कैसे हो रहा है। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू इट हियर। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर उसके बाद में हर एक को परसेंट दे सकते हो कि भाई मैनेजमेंट का ट्रैफिक इतना परसेंट खाएगा,
फिर वी मोशन एक कंसेप्ट है जो बाद में बताऊंगा मैं। ट्रैफिक अपना स्टोरेज का कितना लेगा, तो आप वो भी उसमें डिवाइड करके रख सकते हो। ठीक है, दीज आर द थिंग्स। इसमें पूल एक कंसेप्ट है। पूल का कंसेप्ट में अभी जब वी सेंटर आएगा तो ये सारे कंसेप्ट तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो इतने इतने पोर्ट्स है, जैसे फिजिकल पोर्ट्स आते हैं ना अपने, ये लॉजिकल पोर्ट्स है। 0 नंबर के पोर्ट पे पहले मेरा ये डिवाइस कनेक्टेड है। 1 नंबर के पोर्ट पे मेरा ये डिवाइस कनेक्ट है। 2 नंबर के पोर्ट पे ये कनेक्ट है। ऐसे 7 8 हो गए तो वो और बनाते चलता है। ठीक है, दीज आर द पोर्ट्स। ठीक है, कमिंग बैक टू ये, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्विच। अब बारी आती है लॉजिकल स्विच की, जो कि मेन है। ठीक है, लॉजिकल स्विच बता के आज की अपनी क्लास रैप अप करते हैं हम, जिसको बोलते हैं वीएक्स लैन। ठीक है, अब इसमें क्या पंगा क्या था, प्रॉब्लम क्या था ये कंसेप्ट में? सर लॉजिकल स्विच को ब्रॉडकास्ट, क्या बोलते हैं? क्या बोले? लॉजिकल स्विच को क्या बोलते हैं बोले, सुने नहीं दे। ना लॉजिकल स्विच में बताऊंगा अभी। यहां से देखो, मैंने स्टैंडर्ड स्विच बताया और डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बता दिया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लॉजिकल स्विच, थर्ड स्विच। ठीक है, अब लॉजिकल स्विच क्या होता है? पहली बात, ये तो स्विच बनाए थे, लेकिन दे आर बैक्ड बाय वीलैन ओनली। ये जो स्विचेस है, ये बैक वीलैन ही सपोर्ट करते हैं, राइट? नाउ वी गॉट अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड एज वीएक्स लैन। तो वो वीएक्स लैन आपको देखना है। सो लेट मी गो अहेड एंड एक्सप्लेन। इतना टॉपिक बना के बता के देन विल गो अहेड एंड ठीक है, ये देखो, ये होता है आपका फिजिकल स्विच। आपके वीएम्स नहीं क्या, पिंक वीएम का ट्रैफिक लेके जाएगा, फिर इसका लेके जाएगा, फिर ऑरेंज वाले का बाहर लेके जाएगा विथ वीलैन टैगिंग। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्विच ऐसे होता है कि भाई स्केलेबिलिटी नहीं है उसकी। आप एक पे बनाएंगे, दो पे एक्यूरेट बनाएंगे, तीसरे पे या चौथे पे कहीं ना कहीं तो आगे पीछे XYZ कर लेंगे। जनरली अगर आप देखेंगे, जो भी कंपनी में वीटीपी अभी यूज नहीं हो रहा है, तो किसी स्विच पे 50 वीलाइन है, तो किसी के ऊपर 56 है, तो किसी के ऊपर 55 है। करेक्ट और नॉट? मुबीन भाई सही है क्या? यस। हाँ। ठीक है, तो इसके लिए टू हैव दिस वन डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच कंसेप्ट आया, जिसने वी सेंटर ने लेके आया उसको। ये क्या करता है, एक हिडन स्विच हर एक के अंदर ये करता है, ये खुद बनाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि आप मुझे बताओ कैसे बनाना है, मैं वहां पे जाके बनाता हूँ, जैसे वीटीपी काम करता है अपना। ठीक है, तो वी स्पेयर डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच इज मैनेज सेंट्रली बाय वी सेंटर। वी सेंटर एक मैनेजमेंट प्लेन है जो खुद मैनेज करता है, हिडन स्विचेस उसमें डाल देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप्स कैन बी स्पैन मेनी होस्ट एंड इंश्योर आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। जो भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप बनाते हो, वो सब में वो इक्वली डिवाइड करके आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। यहाँ जो नाम है वही नाम रहेगा 10 होस्ट पे, यहाँ पे जो नंबर है वही रहेगा। ठीक है, वीएम कर्नल पे अभी नहीं आते हैं। प्राइवेट विलान सबको पता है, प्राइवेट विलान कैसे काम करता है। ठीक है ना, राउट बेस्ड ऑन फिजिकल निक लोड एंड टीम शेयरिंग। ये राउट बेस्ड क्या होता है, मीन्स अलग अलग उसका टीम मीन्स कैसे शेयरिंग करेंगे, लोड वगैरह। निक कार्ड अगर 2 निक कार्ड है तो जनरली कैसे लोड शेयर, वो तो हैशिंग करता है उसके ऊपर फिर वो। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट वेज, LACP PAGP, दोज आर द थिंग्स। जनरली सर्वर के साथ भी तुमको पता है पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर किया जाता है अभी। ठीक है, तो नाउ-ए-डेज पहले सर्वर के साथ नहीं किया जाता था। सर्वर को तो हम एक्सेस पोर्ट समझते थे, लेकिन जैसे जैसे चीजें बदलती गई, नाउ वी आर डूइंग पोर्ट चैनलिंग विद सर्वर्स। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर वीएक्स लैन। ये कंसेप्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट दिस कंसेप्ट इज, अगर आप देखोगे वीलैन में क्या प्रॉब्लम था हमारे लिए कि इट ओनली सपोर्ट्स 4094। सही है, कितने वीलैंस बना सकते थे आप? 4090। ठीक है, तो कंपनीज ने क्या किया पता है, इसको फिक्स, इसको सॉल्व करने के लिए कंपनीज ने क्या किया कि भाई हम 4000 बनाते हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, पॉड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉड 1। इसके अंदर स्विचेस राउटिंग सब भर दिए। फिर दूसरे कस्टमर के लिए पॉड 1 बना दिए। तो यहाँ का VLAN 10 और यहाँ का VLAN 10 डबल यूज करने को मिल गया उनको। समझ में आ रहा है?
क्योंकि अगर एक ही बड़ा पॉड एक ही बनाएंगे बड़ा इन्वायरमेंट, उसके अंदर सब शेयर्ड रिसोर्सेज रखेंगे, तो कितने विलान मिलेंगे आपको? 4094। So what they did, Yes. they used to configure small pods. समझ में आ गया? अब कितने मिले? 12,000 मिल गए। लेकिन ये फिर इसमें क्या राउटिंग वगैरह कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, करेक्ट? ये डेटा सेंटर में होता है, अपने इसमें नहीं होता है, स्टैंडर्ड में, एंटरप्राइज में। ठीक है, तो इसके लिए नाउ दे केम अप विद द सॉल्यूशन, जिसका एक से लेके यहाँ तक था। तो इन्होंने क्या किया, जैसे IPv4 के बाद V6 आया, अब VLAN के बाद VXLAN आ गया। तो VXLAN का रेंज है 1 से लेके 16 करोड़ तक। अब VLAN कितने बनेंगे आपके? तो इनफ है प्रदीप भाई, शबीब भाई, हाँ भाई, ये वैल्यू इनफ है? बहुत सर। इनफ होंगे। ठीक है, जैसे IPv4 अपग्रेड हुआ तो VLAN भी अपग्रेड हो गया। ठीक है, तो ये नॉट ओनली दिस, इसका कंसेप्ट भी अलग है टोटल। आप इसको ऐसे मत समझो कि एक VLAN बना दिया चल गया, इसका कंसेप्ट टोटल अलग है। ठीक है, VXLAN क्या है मैं तुमको समझाता हूँ, बहुत मेरे को टाइम गया VXLAN समझने को, लेकिन तुमको नहीं जाएगा। ठीक है, तो VLAN का रेंज जो होता है इसके VXLAN का, इसको VNI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VNI का रेंज होता है 1 से लेके 16 लाख करोड़ तक। ठीक है, 16 करोड़ तक। 16 VMware डिसाइडेड टू यूज सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 5000। अभी VLAN का नंबर है, अब अगर आपने 1 नंबर दिया तो VNI नंबर है कि VXLAN नंबर है, ये पता चलने के लिए कंफ्यूज होगा तो एक काम करते हैं, हम 5000 के आगे यूज करते हैं, ये 5000 उनके लिए छोड़ दिए। क्या बोलते हैं? ये नंबर तो उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिए, VNI के 5000 से शुरू कर दिए। ठीक है, जस्ट ओनली फॉर यू कैन यूज 1 2 3, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा ना। ठीक है, लेकिन अब इसका कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है। ये क्या करता है, ये इनकैप्सुलेट करता है। ठीक है, अब किसको इनकैप्सुलेट करता है, क्या इनकैप्सुलेट करता है, मैं अभी 1 मिनट में तुमको बताता हूं। सपोज ये तुम्हारे पास 3 सर्वर्स है, ये बड़ा सर्वर, ये दूसरा बड़ा सर्वर, ये तीसरा बड़ा सर्वर। ठीक है, यहां तुम्हारे पास एक ब्लैक VM है। ठीक है, और तुम्हारे पास एक ब्लैक स्विच है। लंबा करूं या कैसे करूं? वैसे अलग नहीं दिखेगा, ऐसे छोटे छोटे बनाता हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। ठीक है, हर एक सर्वर में एक स्विच है, और तुम्हारे हर एक सर्वर में एक एक VM भी है, ब्लैक VM। अब मुझे बताओ कि VM A को B किधर नहीं पता। ठीक है, और ये यहाँ पे स्विच को कनेक्ट है। तो अभी मुझे ये बताओ, ये सिंपल अपना ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, एक ही VLAN, नथिंग, नो एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन, ये फिजिकल स्विच को कनेक्ट है। अब इमरान सर मुझे बताओ, अगर VM A को B को पहुंचना है तो पैकेट किधर किधर जाएगा, C को जाएगा कि नहीं जाएगा? अननेसेसरीली ब्रॉडकास्ट होगा ना, जाएंगे जाएंगे ना। ट्रैफिक यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये एक पोर्ट को इधर भी देगा और दूसरे पोर्ट को इधर भी देगा। ठीक है, तो ये अननेसेसरी हो गया। तो इसके लिए अगर इसने अगर आगे दिया लूप प्रिवेंशन के लिए, फिर क्या करते अपन, यूज क्या करते फिर अपन? STP। STP। तो अभी इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई एक काम करते अपन, ये मैकेनिज्म नहीं चलेगा अभी। ठीक है, अभी ये इनको आप लॉजिकल स्विच समझो, सेम स्विच, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच ही समझो, कोई चेंज नहीं। लेकिन अब उसने बोला कि भाई मैं एक काम करता हूं, ये तुम्हारे जो पोर्ट ग्रुप का कंसेप्ट है ना, मैं पोर्ट ग्रुप नहीं यूज करूंगा, मैं मेरा मेरा खुद का बनाऊंगा लॉजिकल स्विच, तुम्हारे पास ही बनाऊंगा, तुम्हारे स्विच के अंदर ही बनाऊंगा लॉजिकल पोर्ट ग्रुप। ठीक है, ये पोर्ट ग्रुप कैसे काम करेगा, ये तुम्हारे जैसे काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे एक टेप एड्रेस बनाएगा हर एक के पास। ठीक है ना, तुम्हारा एड्रेसिंग तुम्हारे पास रहने दो, ट्रंक को एड्रेस थोड़ी होता है, लेकिन ये क्या करेगा, ये इंटरफेस पे जाके एक ट्रंक टेप एड्रेस बनाएगा। क्या बनाएगा? टेप इंटरफेस। और ये बोलेगा कि भाई जितना भी ट्रैफिक बाहर जाना है तो सब मेरे पास आओ। तो ये क्या करेगा, ब्लैक VM, अभी वो VLAN वाला कंसेप्ट भूल जाओ, अभी VXLAN शुरू हो गया। ये क्या करेगा, ये आएगा और ये ट्रैफिक दे देगा इसको,
और ये बोलेगा कि भाई बी किधर है। अब बी किधर है कौन बताएगा इसको, तो यहाँ पे NSXT मैनेजर बैठा हुआ रहेगा। कंट्रोल प्लेन को तो सब पता होता है कौन किधर है। व्हाट माय पॉइंट। ये इसको पूछेगा कि भाई NSXT बी किधर है बता, तो वो बोलेगा बी इसके पास है, तो ये सीधा उड़ी मार के जाएगा इसके पास और यहाँ ले जाके उसको दे देगा। क्लियर। जी। ठीक है, तो अब क्या हुआ पता है कि भाई अब ऐसे हुआ कि भाई सी के पास जाना है, तो ये जाएगा, मुझे मालूम नहीं सी किधर है, ये जाएगा NSXT को पूछेगा सी किधर है, तो सी उसके टेबल पे देखेगा और बोलेगा जाओ सी इधर है, तो ये सीधा उड़ी मार के जाएगा सी के पास। करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड VXLAN। ये टेप क्या करेगा, इनकैप्सुलेट करेगा तुम्हारा पूरा पैकेट, और टेप इसको एड्रेसेस देगा, इसको 192.168 सपोज 1.200 दिया, इसको देगा 201, इसको देगा 1.202, इसको बोलेंगे आप टेप एड्रेसेस, टनल एंड पॉइंट्स। क्या बोलेंगे आप, टनल एंड पॉइंट्स। अगर यहाँ पे टनल एंड पॉइंट्स IP बेस है तो STP की जरूरत है क्या? नहीं। दैट द रीजन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में STP इलिमिनेट हो गया। आपको स्पैनिंग ट्री रन ही नहीं करना है। क्यों रन नहीं करना है? देखो, राउटिंग में स्पैनिंग ट्री लगती है क्या, कि स्विचिंग में लगती है सिर्फ? L2 पे चलती है सिर्फ। बस खत्म, ये L3 बन गया। अब ये L3 बन गया लेकिन ये स्विच तो L2 है, तो हम क्या करते हैं, ये स्विच को बोलते हैं कि भाई तू सिर्फ जंबो पैकेट सपोर्ट कर। क्या कर, अगर तुम्हारा स्विच L2 है तो 4 लैपटॉप उसको कनेक्ट है, तो एक दूसरे को बात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, राइट। कम्युनिकेट करते हैं। यस। हाँ, लेकिन ये पैकेट आपका खोलेगा नहीं, तो हमको खोलने भी नहीं देना है उसको। सिर्फ हम बोलेंगे कि भाई तू जंबो पैकेट सपोर्ट कर बियॉन्ड 1700 MTU। सिर्फ तू एक काम कर, हमारा पैकेट लेके जा, मैं बोलता हूँ किधर ले जाना है, मुझे ले जाना है ये 201 को, तू ले जा और इधर ले जाके दे। इसका मैक एड्रेस भी देता हूँ मैं, BB है, ठीक है, तू जा BB को दे दे, फिर CC को दे दे जब जरूरत है तब। ये मैं AA हूँ, मैक एड्रेस, इसका सिर्फ काम इतना ही है, ठीक है, और बाकी सब ये कर लेगा। तो अब यहाँ पे फर्क ये गिरा कि आपको पहले VLAN नंबर आपको रिजर्व करना पड़ते थे कि नहीं? यस। रिजर्व करके फिर आपको क्रिएट भी करना था। अभी वैसे नहीं करना है। आप NSX के पास जाओ, मुझे बोलो कि मुझे नया सेगमेंट बनाना है, आई वांट टू क्रिएट न्यू सेगमेंट, ठीक है, वो बोलेगा ठीक है क्या IP देना है, मैं बोलूंगा 10.1, ठीक है, जाओ, तुमको VXLAN एक मिल गया। वो जैसे ही जाएगा ऑटोमेटिक VXLAN उसके पूल में से वो 5000 जो है ना, मैं बोलूंगा मैं एक पूल नंबर देता हूँ, VXLAN मेरे शुरू होंगे 5000 से और खत्म होंगे 6000 पे। इसमें से एक पूल में से उठाएगा, 5001 तो चला गया, चलो 5002 ले लेता हूँ। NSX यहाँ से उठाएगा, ये IP यहाँ से उठाएगा और यहाँ पे ले जाके आपको दे देगा। तो जितने बार भी आएगा आपको 1000 आप बना दो, ये पूल में से उठाते जाएगा। आपको रिजर्वेशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, नो नीड टू डू एनी VLAN रिजर्वेशन और VLAN डेटाबेस मैनेजमेंट, NSX सब काम कर देगा आपका, ठीक है। तो ये तो था आज का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अपना क्लास ऐसे ही चलेगा 11:30 तक, 9 से लेके 2.5 घंटा, एंड विल रैप इट अप एज पर यूर दिस वन। एनी क्वेश्चन गाइस? अभी VXLAN पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी है, सिर्फ मैंने आपको इंट्रो दे दिया VXLAN का। But sir, most probably we are using ACI NSX 900 switches, right? ठीक है, For अब those ये hardware. अगर ये ACI हो क्या कुछ भी हो या नेक्सस हो, L2 में चला गया कि नहीं गया? क्योंकि L3 काम तो यहाँ होने वाला है, बाकी का राउटर यहाँ बनने वाला है, लोड बैलेंसर यहाँ बनने वाला है, फायरवॉल यहाँ पे आने वाला है, तो यहाँ पे क्या जरूरत है, हमको सिर्फ जंबो पैकेट चाहिए। तो ACI जब भी NSXT जब भी आता है, ACI L2 में चला जाता है। बोलो। इसका पैकेट फ्लो ऐसा होगा ना, फिर ये हार्डवेयर टेप पे से आपको जनरेट करके स्विच को देगा, स्विच सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक देख के खत्म, फॉरवर्ड करेंगे ट्रैफिक। तो स्विच L2 में चला गया ना, फिर स्विच L2 के सिवा कुछ भी नहीं करेगा। तो आप ACI लगाओ या कुछ भी लगाओ, लेकिन ACI इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इट्स गिविंग हाई परफॉर्मेंस। L2 का परफॉर्मेंस हाई चाहिए ना तुमको,
राइट? सर ये जो L2 जंबो वाला पैकेट वाला स्विच है जो, तो NSXT उसका एड्रेस बता रहा, उसके साथ उसका मैक एड्रेस देगा तो वो जंबो वाला स्विच उधर मैक को फॉरवर्ड करेगा ना पैकेट? करेक्ट, क्योंकि NSXT का जो कंट्रोल प्लेन है ये टेबल है उसके पास, 3 टेबल टेबल ये है, मैनेज कर रहा है NSXT। NSXT मैनेज कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, पहले प्लेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ना हमने, यहाँ सिर्फ डेटा प्लेन है, कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन यहाँ बैठे वाला है, ये सब इंस्ट्रक्शन कर रहा है। इनको कुछ भी तकलीफ है ये इनको पूछेंगे भाई कहाँ जाना है, ठीक है? ओके। जैसे कि ACI में देखो किसी प्रिंसिपल को कोई बच्चे को ढूंढना है, सपोज एक स्कूल में 1000 बच्चे, अब प्रिंसिपल को एक बच्चे को बात करना है, तो प्रिंसिपल क्या करेगा? सीधे चेक क्लास को करेगा कॉल पहले। करे, क्लास को। सिंपल वो पूछेगा कि भाई हाँ कौन से क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का, बुलाओ उसके क्लास टीचर को, खत्म। क्लास यूनिक टीचर को चीज तो से पता रहेगा ना। आइडेंटिफाई करेंगे ना। हम्म, तो NSXT सब इंफॉर्मेशन सेव करके रखता है। तो ये साबिर सर, ये ACI में भी ऐसा IP डाल नहीं मिलता, मैक के डालने पे मिलता वो डिटेल उसका, देखो ACI एंड टू एंड लॉजिकल ट्रैकिंग करते तो हम। वर्चुअलाइजेशन नहीं देता। ACI सिस्को का प्रोडक्ट है, सिस्को इज अ नेटवर्क प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको वर्चुअलाइजेशन करना है इंक्लूडिंग कंप्यूट, नेटवर्क एंड स्टोरेज, तो VMware बेस्ट प्रोडक्ट होता है। गॉट माय पॉइंट? ACI तो बाहर बुलाएगा ना तुमको राउटिंग के लिए, अंदर थोड़ी आएगा तुम्हारे पास। नहीं, एसीआई एसडीएन सॉल्यूशन है एक्चुअल में, जैसा एसडी वैन है डीएनए सेंटर है, वैसे एसीआई डेटा सेंटर के लिए मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट प्लेन। नहीं नहीं हाँ नहीं, बरोबर। पहली बात तो ACI सॉफ्टवेयर डिफाइन है, लेकिन SD वैन नहीं। SD वैन बोले क्या? एसडी वैन SD टाइप वैन में के जैसा बोलते मतलब थे नहीं सॉफ्टवेयर। नहीं नहीं, मैनेज करने के लिए। SD वैन इज टोटली डिफरेंट। ये डेटा सेंटर प्रोडक्ट है। SD वैन तो एकदम छोटे छोटे लोकेशंस को एक जगह करने के लिए। SD वैन क्या है? SD वैन क्या करेगा, आपके 10 लोकेशन है, आप वहां पे जाके राउटर स्विच वगैरह सब कॉन्फ़िगर करते थे, तो वो बोलेगा नहीं एक बॉक्स लेके जाओ, काम खत्म। ठीक है, वो तो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसके ऊपर अपन बहुत और विल डिस्कस मोर थिंग्स। ठीक है, तो एक बार यू हैव वंस योर कंसेप्ट गेट क्लियर, यू विल आल्सो फील इट। तुमको ये रियलाइज भी होगा जो मैं आपको लॉजिकल चेंजेस बता रहा हूँ, लॉजिकल स्टैंडर्ड स्विच, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, वी सेंटर, ये सब तुम करने वाले हो इन नेक्स्ट 5 सेशंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सेशंस। आई डोंट वांट टू एक्सटेंड बिकॉज हर एक के अपने अपने आपके ये होते हैं, डिपेंडेंसीज होते हैं सैटरडे संडे के। तो I am done with my this one. I am going to stop the recording. If you have any question, you can feel free to ask. I am here only. ठीक है, तो अगर हम बातें करते करते इसको एक्सटेंड करेंगे तो अदर